Well, the national capital and the Delhi, its adjoining areas continue to be a gas chamber through and through. This is what the AQI looked like this very morning. Because amid the worsening air quality in the Delhi-NCR, the Supreme Court has, today ordered all courts in the national capital and its surrounding areas to conduct virtual hearing. That's coming from the Chief Justice of India himself. Supreme Court observed that the lesser there will be vehicles on the road, there will be a reduction in air pollution, and this can be achieved only with everyone's support. Chief Justice Sanjiv Khanna, he said that lawyers can appear online amidst Delhi's severe air crisis. Meanwhile, Delhi's air quality, it continues to spiral out of control. You can look at some of those fresh visuals on your screens of how the morning these days look like. With the air quality index recorded at a hazardous 494 this very morning, according to the Central Pollution Control Board's Sameer application. Now, these places in the Delhi-NCR certainly causes an alarm. It places the national capital in the very serious category as the AQI hits a record low. Residents are continuing to choke on this thick, toxic air with reduced visibility, burning of eyes, and serious health risks that are on the horizon. The national capital is bracing for more health complications as these pollution levels are showing no signs of easing, leaving citizens suffocating and vulnerable to respiratory issues. Take a look at this. In some areas, including Anand Vihar, Ashok Vihar, and Jahangirpuri, the AQI has hit the 500 mark, the highest on the scale. Other areas like Mundka, Rohini, and DU's North Campus area also recorded 500 AQI and above, choking residents with dangerous air pollution levels, poisonous air rather. Neighboring cities are faring no better. Take a look at this. Ghaziabad's AQI currently stands at 472, Gurugram at 440, you've got Noida at 434, a slight respite but still above the 400 mark, making the air unsafe across the entire national capital region. The toxic air is being compared to smoking at least 21 cigarettes a day, posing severe health risks as well. The worsening air pollution, fueled by stubble burning and, of course, unfavorable weather conditions, lack of wind movement, it has prompted the Delhi government to declare the situation a medical emergency. Now, educational institutions are taking precautionary measures nonetheless. You've got Delhi University and Jawaharlal Nehru University that have shifted classes online until the 23rd of November and 22nd of November respectively. Meanwhile, physical classes for class 10th and 12th in Delhi schools will also move online starting tomorrow as ordered by Chief Minister Atishi. The Supreme Court has also stepped in, directing all Delhi-NCR states to strictly enforce Stage 4 of the Graded Response Action Plan. That's the GRAP Stage 4. The court has criticized the Commission for Air Quality Management, the CAQM, for delays in implementation of the GRAP Stage 4, calling their approach absolutely wrong, as a dense smog, like you can see on these visuals on your screens, continues to choke the National Capital Region for the 7th day on. The Union Health Secretary has issued an updated advisory to states stressing immediate preventive measures to safeguard public health. Meanwhile, in this exclusive conversation, Delhi Environment Minister Gopal Rai, he today said that his government was continuously working to improve the deteriorating air quality in the national capital. Speaking to the media, the minister informed that his government has banned BS3 petrol four-wheelers and BS4 diesel vehicles. All trucks, diesel buses coming from outside have been banned. Schools have been closed for 10th and 12th as well, while timings have been staggered for offices. Gopal Rai, the Delhi's environment minister, has also said that his government is discussing odd-even rule, and if Delhi's AQI does not improve soon, then the government can contemplate implementing the odd-even scheme. The environment minister also hit out at the centre, saying rules are being violated in the BJP-led states in North India, and quite aggressively gave this particular bite. Gopal Rai also added that his government will ask Union Environment Minister to call an emergency meeting on pollution and allow for cloud seeding, something that the Aam Aadmi Party government had written to the centre back in August, and artificial rain as well. गोपाल राय जी, दिक्कत कहाँ आ रही है? ये 4 चिट्ठी आप लेके बैठे हैं, इनके बारे में बताएं। देखिए, दिक्कत यहाँ आ रही है कि आज पूरा उत्तर भारत प्रदूषण की मार को झेल रहा है
और हमारे देश में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे सो रही है जिससे कि वो इस देश की सरकार हो ही नहीं, इस देश के लोगों को उसको चिंता हो ही नहीं है। दिल्ली के अंदर जो आज इमरजेंसी सिचुएशन पैदा हुई है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिस तरह का स्मॉग का चादर ऊपर आसमान में छाया हुआ है, इसको तोड़ने के लिए दो उपाय है, या तो तेज हवा चले और या फिर बारिश कराई जाए। आर्टिफिशियल रेन के लिए, कृत्रिम बारिश के लिए हमने अगस्त से केंद्र सरकार से निवेदन शुरू किया। हमने जब अगस्त में सबसे पहले, अगस्त में ये 30 अगस्त को हमने पहली चिट्ठी लिखी थी, कोई जवाब नहीं दिया मीटिंग बुलाने के लिए। इस 30 अगस्त की मीटिंग के बाद फिर हमने उनको ये 10 अक्टूबर को चिट्ठी लिखी, कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद फिर हमने ये चिट्ठी लिखी 23 अक्टूबर को, कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद फिर ऑनलाइन मीटिंग हुई जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री और पर्यावरण मंत्री दोनों थे, उनसे भी निवेदन किया, कोई जवाब नहीं आया। आज तक एक बैठक भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुलाने को तैयार नहीं है। एक और लिख दिया आज दिल्ली में इमरजेंसी सिचुएशन बन चुकी है। आज पूरे उत्तर भारत में एक मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन बन चुकी है। इसलिए आज फिर हमने ये चिट्ठी लिखी है कि तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाएं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी, जिसमें IIT कानपुर के वैज्ञानिकों को बुलाया जाए, दिल्ली सरकार को बुलाया जाए और जिन विभागों को केंद्र सरकार के परमिशन देना है उनको बुलाया जाए। मैं प्रधानमंत्री जी से भी अपील करना चाह रहा हूँ कि इसमें तुरंत हस्तक्षेप करें। आधा देश आपका इंतजार कर रहा है, आप कब तक आपकी सरकार सोती रहेगी? क्या इस बैठक के होने से रास्ता साफ हो जाएगा? बाकी अन्य जो तैयारियां हैं, क्या खर्चा होता है, प्रक्रिया क्या होती है, वो थोड़ा और बता दें। परमिशन मिलने के बाद सारा रास्ता साफ हो जाएगा। सबसे बड़ा जो बैरियर है वो परमिशन है। पिछले साल ही IIT कानपुर के लोग आए थे, सारा जो खर्चा था दिल्ली सरकार उठाने को तैयार थी, लेकिन परमिशन की वजह से वो नहीं हुआ। इसीलिए आज इस बार हमने अगस्त से ही इसकी तैयारी शुरू की कि जिससे कि सभी परमिशन हो चुके, अब इमरजेंसी सिचुएशन आ चुकी है, इमरजेंसी मीटिंग बुला करके परमिशन दिए जाएं और इस स्मॉग को तोड़ने के लिए आर्टिफिशियल रेन कराई जाए। Well, my colleague Jitendra Bhati joins us live on the broadcast right from outside the Delhi Secretariat here in the National Capital Region. Jitendra, अभी आपका रिएक्शन बाइट सुना गोपाल राय के साथ। आर्टिफिशियल रेन की अगर बात की जाए, जिसके बारे में एनवायरनमेंट मिनिस्टर कई बारी बात कर चुके हैं, एक्चुअली कितनी ज़रूरत है इस समय नेशनल कैपिटल को एक आर्टिफिशियल रेन की? बिल्कुल, देखिए इसी सवाल का जवाब हमने गोपाल राय से तलाशा, जो कि सचिवालय के अंदर बैठे हुए। उन्होंने कहा कि अब अगर दिल्ली को फौरी तौर पर आपको प्रदूषण से बचाना है तो एकमात्र उपाय है या तो नेचुरली रेन हो जाए, विंड की स्पीड बहुत बढ़ जाए, या फिर आर्टिफिशियल रेन करा ली जाए। अब देखिए, आर्टिफिशियल रेन अगर दिल्ली में करानी है तो दिल्ली क्योंकि नेशनल कैपिटल है, यहाँ पर सेंटर से परमिशन उनको चाहिए होगी। उन्होंने कहा कि हमारे IIT के जो साइंटिस्ट हैं उनसे बात हो चुकी है, पूरा एक्शन तैयार है, जो भी एक्सपेंडिचर आएगा वो दिल्ली गवर्नमेंट बियर करेगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है परमिशन के। परमिशन जब मिलेगी जब यूनियन जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, वो मीटिंग करें और मीटिंग करने के बाद में आगे तमाम जो उसे जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ बैठक करें, तब जाके चीज़ें हो सकती हैं। तो उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर दिल्ली को इस स्मॉग से निजात दिलानी है तो उसके लिए आर्टिफिशियल रेन एकमात्र उपाय है, और इसे कराने के लिए बगैर केंद्र के सहयोग के नहीं हो सकते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। देखिए, पिछली बार भी दिल्ली सरकार का कहना था पूरी तैयारियां थी, लेकिन बावजूद उसके जब उनको परमिशन नहीं मिली तो रेन नहीं करा पाए थे। तो फिलहाल दिल्ली जो है एक एयर मेडिकल इमरजेंसी से गुजर रही है, और यहाँ पर दिल्ली सरकार का आरोप है कि पूरा नॉर्थ इंडिया जब इस इमरजेंसी से भुगत रहा है तो ऐसे में जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। चार गोपाल राय यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर पर भी निशाना साध रहे हैं। जनता के मुद्दों पर पॉलिटिक्स हो रही है, सीधी सीधी बात। बिल्कुल देखिए दिल्ली की जो पब्लिक है, जो वो विधायक का चुनाव भी जो उसमें वोट डालती है, सांसदी के लिए भी डालती है, और जो सांसद चुने आते हैं वो केंद्र में सरकार बनाते हैं, और जो विधायक चुने आते हैं वो दिल्ली में सरकार बनाते हैं। तो दोनों की तरफ देख रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, जो बॉल है वो पास की जा रही है।
जो बीजेपी है वो दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसको थ्रो कर देती है, कहती है इनकी वजह से हो रहा है। अभी आपने सुना जो मोमेंट मिनिस्टर हैं दिल्ली के गोपाल राय, वो कह रहे हैं कि सेंटर में जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो इसको लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं है, उनकी जो लेटर्स हैं उनको जवाब नहीं देते हैं, तो बॉल को एक दूसरे पास किया जा रहा है। लेकिन इस बीच घुट कौन रहा है? दिल्ली की जनता, जिसको सांस लेना बेहद मुश्किल हो रहा है। Jitendra Bhati joining us live from right outside the Delhi Secretariat, bringing us that exclusive conversation. Many thanks, Jitendra. It is certainly really sad to see that on issues of public importance, they are heavily being politicized. But here's a different angle about how to look at this air crisis in the national capital, because Congress leader Shashi Tharoor has today criticized the central government for failing to address the severe air pollution in Delhi. Calling the national capital the most polluted city in the world, Tharoor expressed concern over its uninhabitable conditions during winter months and poor air quality throughout the year. Tharoor highlighted the government's inaction despite years of warnings. He even questioned whether Delhi should remain the national capital given its severe environmental challenges. Air and water pollution unabating in the national capital. Shashi Tharoor calls for a new capital to India. Shashi Tharoor alleging that the polluted national capital is unlivable in the winter months.